यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट जा रहा है और नंबर ऑफ लाइन्स आएगी स्ट्रेट लाइन की, बट मैं कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए सिर्फ जो लाइट बेंड हुआ वो बताया आपको. The bending of light is takes place. Direction of light after passing through this slit takes place. Change in direction is takes place because of diffraction. Means here the diffraction of light is takes place. यहाँ पे diffraction हुआ है. Now there is the another lens L2. This is also the biconvex lens. तो biconvex lens के अंदर क्या होता है, ये जो रेस थे इनको फोकस करने के लिए, एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए यदि लेंस यूज करते हैं सब रेज इस साइड में जाएंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो सब रेज एक जगह पे नहीं आएंगे. सो टू फोकस ऑल द पॉइंट्स एट वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन वी यूज द सेकंड बाइकॉन्वेक्स लेंस L2. ये वाला L2 लेंस यूज किया. सो दिस इज डायग्राम फॉर द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. And the another diagram is the Fresnel diffraction. This diagram is for the Fresnel diffraction. What is Fresnel diffraction? So in Fresnel diffraction, directly light emitted by source incident on the aperture or slit. Slit के ऊपर direct incident होता है. And after passing through the slit, the diffraction of light is takes place. The direction of light gets changed, or you can say that the bending of light is takes place. Bending होता है light. देखो डायरेक्शन चेंज हुआ लाइट का. आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ऑल दिस डिफ्रैक्टेड रेज इंसिडेंट एट वन पॉइंट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के एक पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है सबके सब रेज. दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑफलाइन एग्जाम पूरा तो क्वेश्चन आता है. What is the difference between Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction? So what is the difference between Fraunhofer and Fresnel diffraction? So by using these two diagrams, we can explain what is the difference between Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction. So see here, there are different points. Diagram आपने याद रखना है. So see here, what is the first? In Fraunhofer diffraction, the distance between source and screen is infinite from the aperture. The distance between source and screen is infinite from aperture or obstacle. जो distance है, what is distance? The distance of source and distance of screen is infinite from the slit. Slit से कहाँ से distance measure कर रहा हूँ मैं? Slit से, aperture से. The distance of source and screen from aperture is infinite. Distance कैसा रहता है? Infinite रहता है. And so, as the distance is infinite, we require the biconvex lenses for focusing purpose. Distance infinite होने की वजह से we require the biconvex lenses for focusing of the light. Light का focus करने के लिए biconvex lenses. This is the first definition of the Fraunhofer diffraction. यदि आपको पूछा गया what is Fraunhofer diffraction, so you should write down in Fraunhofer diffraction the distance of source and screen from the aperture is infinite. ज़्यादा distance होता है, infinite होता है. And for the focusing purpose, we require, as the distance is infinite, the lenses, biconvex lenses are required. Biconvex lenses लगती है. Then what is Fresnel diffraction? So Fraunhofer diffraction यदि पता है आपको तो you can easily write down about the Fresnel diffraction. So what is Fresnel diffraction? So the distance between source and screen, this is the screen, source and screen is finite from the aperture or slit. Slit से source का distance और slit से screen का distance finite रहता है. So that's why as the distance is finite, the lenses are not required. Biconvex lenses are not required in the Fresnel diffraction. Fresnel diffraction में biconvex lenses नहीं लगती है. Do you understand? Do you understand what is Fraunhofer diffraction and what is Fresnel diffraction? Hello. Yes, sir. It's very easy and simple. Then what is the second point? सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, मैंने एक्चुअली पहले पॉइंट में कवर किया. फिर भी the biconvex lenses are required
In Fraunhofer diffraction, biconvex lenses are required. Fresnel में क्या लिखेंगे? Biconvex lenses are not required. Biconvex lenses are not required. Okay, this is the second point. कहाँ से बना रहा हूँ मैं points? Diagram के ऊपर से. So diagram is very very important. Diagram is the first one itself. पहला point क्या लिखोगे? Diagram. बाद में definition. Then third point, that is the biconvex lenses are required. Biconvex lenses are not required. What is the third point? The wavefront incident on the aperture or obstacle is plane. So wavefront, we know that when the light incident on the any obstacle or aperture, it produces a wavefront. Wavefront तैयार होता है light. Here, the light is the rays which are incident on the slits are parallel to each other. So rays incident or a slit के ऊपर कैसे? They are parallel to each other. So when the parallel beam of light incident on some object, then it produces the plane wavefront. कैसा wavefront produce करता है? Plane wavefront produce करता है. The wavefront incident on aperture or slit is the plane. It produces the plane wavefront because all the rays are parallel to each other. जो भी rays incident हो रहे हैं, वो parallel एक दूसरे को. In case of Fresnel diffraction, see here diagram में देखना है. The rays are not parallel to each other. Rays कैसे? All directions के अंदर move हो रहे हैं. So they are not parallel to each other. So when these non-parallel rays incident on any object or screen or any slit, then it does not produce the plane wavefront. Plane wavefront नहीं produce होगा. कौन सा wavefront produce होगा? Either cylindrical or circular. Either circular or cylindrical wavefront is produced. So in Fresnel diffraction, the incident wavefront is either circular or cylindrical. Cylindrical या तो circular wavefront वो produce करेगा. Not circular, it is called as the spherical. Spherical बोलेंगे हम इसको, because light is spread in all directions. So that's why it is called as the spherical. What is the fourth point? From this diagram. Here see, after diffraction the rays are parallel to each other. Diffraction के बाद भी rays कैसे हैं? एक दूसरे को parallel है. So the diffracted wavefront is also plane. The diffracted rays produce the plane wavefront. Diffracted rays भी कौन सा wavefront produce करेंगे? Plane wavefront. In Fresnel diffraction, the diffracted rays are also not parallel to each other. ये diffracted rays कैसे हैं? एक दूसरे को parallel नहीं. So that's why they produce the diffracted rays produce the either spherical or cylindrical wavefront. The diffracted rays also produce the either spherical or cylindrical wavefront. Do you have any problem up to this? Diagram के ऊपर से बता रहा हूँ मैं जो भी ये सब. So you should remember diagram first. First point के अंदर diagram लिखना है. Then what is the next point? In this type of diffraction, the angular inclinations, that is the angle of diffraction, is important. Angle of diffraction means the angle made by the diffracted rays with the horizontal axis. Horizontal axis के साथ जो angle तैयार होता है, नहीं ये वाला angle, या फिर जो angle तैयार होता है, this is called as the angle of diffraction. So in Fraunhofer diffraction, the angle of inclination plays the, or it is also called as the angle of diffraction. Angle of diffraction plays the important role, or more important. Angular inclination is more important than the lateral distances. In case of Fresnel diffraction, we can say that in this type of diffraction, lateral distances are important. इसके अंदर ये जो lateral distance है, जो distance है screen का from the slit and the distance of source from the screen, this is more important. The lateral distances are more important than the inclination. Inclination की जगह पे distances, lateral distances plays the important role. Then what is next? Generally, the Fraunhofer diffraction is used in the optical instruments. Optical instruments में कौन सा diffraction use करते हैं? Fraunhofer diffraction. देखो कोई भी optical instrument लिया आपने, माइक्रोस्कोप लिया, टेलीस्कोप लिया, स्पेक्ट्रोमीटर लिया,
इसके अंदर लेंसेज एडजस्ट करने के लिए जगह रहती है। देखो देयर आर टू लेंसेज, दो लेंसेज यूज करते हैं। पहला लेंस इज कॉल्ड एज द what is there are two lenses, objective and the second lens is called as the eyepiece. eyepiece होता है और objective lens होता है, दो lenses, both the lenses are biconvex lenses are there. So Fraunhofer diffraction is used in the optical instrument, and the Fresnel diffraction are rarely used in the optical instrument. Optical instrument में generally use नहीं करते Fresnel diffraction. Then last, that is the mathematical treatment is easy. इसके जो derivations होते हैं Fraunhofer diffractions के, they are more easy as compared to the mathematical equations of the Fresnel diffraction. Fresnel diffractions के अंदर जो treatment है, mathematical treatment है, कुछ भी find out करना है तो that is complicated. But in Fraunhofer diffraction it is somewhat easy, as it is not so easy, but it is easy as compared to Fresnel diffraction. Do you understand what is the difference between Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction? Hello? Yes, sir. Yes, sir. It's very easy. Yes, sir. ना तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज के अंदर तो आपको सॉल्व करके आना चाहिए। कुछ भी घुमा फिरा के एमसीक्यूज बना सकते हैं इसके ऊपर। सो यू मस्ट नो। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में, फ्रॉनहोफर का जो रहता है टाइटल फ्रेजनल लिखते हैं और फ्रॉनहोफर के पॉइंट्स लिखते हैं, और फ्रॉनहोफर के पॉइंट्स फ्रेजनल में लिखते हैं। सब राइट रहता है, बट यदि ऑफलाइन हुआ तो 0 मार्क्स, बिकॉज टाइटल ही रॉन्ग रहता है। तो फ्रॉनहोफर के जो पॉइंट्स है फ्रॉनहोफर में लिखने चाहिए, फ्रेजनल के पॉइंट्स फ्रेजनल में। सो वी स्टडीड जस्ट व्हाट इज द डिफ्रैक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, what is the difference between Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction. The next topic, now derivation is there. Now the first point is the, now in this unit, in this topic or in this part, we have to study only the Fraunhofer diffraction. Fresnel diffraction का study नहीं है as per our syllabus. So we have to study only the Fraunhofer diffraction. सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का स्टडी करना है। सो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए मैंने जस्ट डायग्राम बताया आपको। यहाँ पे थोड़ा बड़े स्केल के अंदर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मेरे पे। सो सी हियर, रेफर दिस डायग्राम। सो एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, L1 is the biconvex lens which is used to get the parallel beam of light. यहाँ पे पैरेलल बीम मिला, दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सिंगल स्लिट। कितनी स्लिट है? पे एक ही स्लिट है, so that's why it is called as the single slit. This is called as the single slit. Fraunhofer diffraction at single slit. एक ही स्लिट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। Then in next topic we will see what happened when the number of slits are there. Number of slits रही तो क्या होता है? Before that we'll study the Fraunhofer diffraction in single slit. So this parallel beam of light incident on the single slit. What is the notation for single slit? M and N. Mn is the single slit. What is the width of single slit? Single slit का width कितना है? A is the width of single slit. Small a is the width of single slit. When the light incident on the single, when the monochromatic light incident on the single slit, Mn of width A perpendicularly, normally, light कैसे incident हो रहा है? Normally. Then what happened? Some of the rays moves in the direction of incident rays. ये जो rays है, incident ray है ना, ये parallel to each other. Some of the rays moves in the direction of incident rays. देखो यहाँ पे 3 rays बताए, तीनों ray कैसे हो रहे हैं? They are moving in the direction of incident rays. The rays which are moves in the direction of incident rays, यानी जिसका diffraction नहीं हुआ, उसका direction नहीं change हुआ है ना, उसका diffraction नहीं हुआ। So the rays which are moves in the direction of incident rays are meet at point C on the screen. C point के ऊपर meet हो रहे सब rays. The rays, the diffracted rays which are moving in the direction of incident rays are meet at point C on the screen. And the rays which are diffracted through angle theta, theta इतने angle से diffraction हो रही है,
the angle of refraction. And the rays which are diffracted through an angle theta are meet at point C dash on the screen. स्क्रीन के ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर मीट हो रहे हैं? सी डैश पॉइंट के ऊपर मीट हो रहे हैं. तो दिस इज अबाउट द डायग्राम. डायग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हमने. Now we are going to see what is the Fraunhofer diffraction and single slit. What happened? So now we know that the intensity of light at point C is always maximum. ये जो central point रहता है, this is called as the central point. Central point पे intensity जो रहती है light की क्या रहती है? हमेशा maximum रहती है. And what is the intensity at point C dash? That is called as the resultant intensity. What is it is called as the resultant intensity? Because number of rays are meeting at point C dash. Number of rays meet हो रहे हैं. हर रे का कुछ तो भी इंटेंसिटी होगा, तो एक रिजल्टेंट सब रे का मिला के एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी देगा आपको यहाँ पर भी. So at point C, the intensity of light is always maximum, and the resultant intensity on the at the point C depends upon the part difference between the secondary waves. ये जो diffraction के बाद जो waves मिलती है इसको क्या बोलेंगे हम? Secondary waves. So the resultant intensity at point C dash, the resultant intensity at point C dash is depends upon the part difference between the rays meeting at point C dash. C dash के ऊपर जो rays meet हो रहे हैं उसके बीच में कितना part difference है उसके ऊपर इसका intensity depends रहेगा. So our aim is to find out the resultant intensity at C dash. हम ये derivation क्यों solve कर रहे हैं? Our aim is to find out the resultant intensity at point C dash. C dash point का resultant intensity हमको find out. या तो C point का या तो C dash point का resultant intensity find out करना है. So to find out the resultant intensity at point C dash, consider the given slit is divided into the n parallel slits of width delta A. हम क्या कर रहे हैं? एक जो सिंगल स्लिट है इसको डिवाइड कर रहे हैं into the number of slits of width delta A. हर स्लिट का width कितना है? delta A इतना width है. ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम सीधी डायग्राम में. सेकेंड डायग्राम. The single slit is divided into the n number of small slits. N number of small slits. So the width of first slit is the delta A1. The width of second slit is the delta A2. The width of third slit is the delta A3, and so on. And the width of last slit is delta AN because it is divided into the n number of slits. So what is the width of last slit? Last slit का width कितना आएगा? Delta AN. The width of the last slit is delta AN. आपको डायग्राम के अंदर बता दिख रहा होगा. And the total width of the slit is A. Total width कितना है mm का? A. Now this is the angle of diffraction theta. This is the first ray, the ray coming from the first slit. This is the ray diffracted due to the second slit, and so on in this steps. Now, यहाँ पे बताया मैंने the total width of the MN is A. So we can write A equal to C here. We can write A equal to delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus dash 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 delta AN. ये सब स्मॉल स्लिट जो थी इसको कंबाइन किया, एडिशन किया तो विल गेट टोटल विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट. सिंगल स्लिट का टोटल विड्थ मिलेगा. दैट इज A. A is the total width and that is equal to delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta dash delta AN. इसका एडिशन लिया तो A मिलेगा. Now our aim is to find out the part difference between first and second ray. First and second ray का part difference हम find out करेंगे. So what is the part difference between first and second ray? So see here now. फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं. This is the slit.
डिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी डिफ्लेक्टेड रे बताए. See here, what is this? This is the angle of diffraction theta. This is the angle of diffraction theta. दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, Hello? sir. So this is the angle of diffraction theta. Now there are the number of slits, बहुत सारी slits है. So when we draw the perpendicular line, इस टाइप से perpendicular line यदि हम draw करते हैं, सीधी रे पर भी पड़ता है. इस टाइप से line में draw करता हूँ. This is single slit. यहाँ पे यदि लिया तो this angle is also theta. If we draw the perpendicular line in this way, so what is this? यहाँ पे notations नहीं दिए हैं. Okay, this is 0. ये जो distance है, I write here A1. ये जो distance है, this distance is the part difference between first and second ray. This is first ray and this is second ray. First and second ray का part difference कितना रहेगा? तो by drawing the perpendicular line. हमने uniform thickness के अंदर देखा था. In this way we can find out the part difference. What is the part difference? This is the when we draw the line perpendicular line on the second ray. Second ray के ऊपर perpendicular line draw किया from first ray. First ray से second ray के ऊपर perpendicular line draw किया. So that is called as the part difference. Part difference between first and second ray is equal to 0 to O point to A point. A point तक का जो distance है, this distance is called as the part difference. Okay. Now our aim is to find out this part difference. ये part difference find out करना है. So here, see here, this angle is also theta. ये वाला angle भी कितना होगा? Theta. If this angle is theta, then this angle is theta. How? कैसे आएगा ये theta? So if there are two lines, दो lines है in this way. There are the two lines. If we draw the perpendicular to the both the lines, ये line को perpendicular draw किया मैंने. ये line horizontal line, इसको perpendicular draw किया. This is the perpendicular. And when I draw the perpendicular line to the, this is the second line. ये line increase किया. When I draw the perpendicular line to the first line also, this is the first line, this is second line. This is the perpendicular line to the second line. What is this? Oh, ये vertical line क्या show कर रही है? It is perpendicular to second line. And what is this? This is the first line. And what is this? This is the perpendicular line to second line. First line. ये first line का perpendicular line है. First dash लिखता हूँ मैं. And this is the perpendicular line to the second line. Second dash. If two lines are inclined with angle theta, if the two lines are inclined with angle theta, then if we draw the perpendicular to the both the lines and increase the perpendicular lines, then the angle between the perpendicular lines is also equal to theta. दोनों perpendicular line के बीच का angle भी कितना होता है? Theta. Do you understand? There are two lines inclined with the angle of. There are two lines, first and two. The angle of inclination is theta. दोनों line के बीच में angle कितना है? Theta. If we draw the perpendicular to both the lines, ये line को ये perpendicular draw किया, ये line को ये perpendicular draw किया. If we draw the perpendicular to both the lines, then the angle between the both the perpendicular line is also same. So that's why that angle is also theta. वो angle भी कितना मिलेगा आपको? Theta. Now see in this diagram. So here, this is the horizontal line, ये perpendicular line हुआ उसका, and this is the ये जो line थी, ये line कैसी है? दोनों lines है ना, ये inclined line. This is first line, this is second line. दोनों line के बीच में angle कितना? Theta. इसका perpendicular है नहीं, ये वाली line. This line is perpendicular to this line. ये line को ये line perpendicular है. ये perpendicular और ये जो horizontal line है उसका ये perpendicular. दोनों lines के बीच में angle कितना तैयार होगा? यहाँ पे theta. This angle is theta. Do you understand why this angle is theta? Hello? Yes. Now, Yes, sir. hello?
Okay, no problem. Yes, sir. Now, Yes, sir. our aim is to find out the part difference between first and second line. ये जो inclined line है, diffracted line है, इसके बीच का part difference find out करना. First line और second line के बीच का part difference find out करना. What is the part difference? That is OA. ये जो distance है perpendicular डालने का जो distance मिलता है, that is called the part difference. So here we'll take the sin theta. Sin theta लोगे तो क्या मिलेगा आपको? In this triangle, ये वाला triangle consider करो. Sin theta equal to see here. Sin theta equal to ये distance कितना है? See here. What is the width of first slit? Delta A1, and what is the hypotenuse? Delta A1 is the, what is this? We have to find out the part. What is the ये जो distance है? This distance is the part difference. So in this triangle, we are going to write down the sin theta. Sin theta लिखने की कोशिश करते हैं हम. Just 1 minute. In this triangle, we are going to find out the sin theta. Sin theta क्या आएगा? Sin theta equal to opposite side. What is opposite side? This one. What is this? This is the part difference. Part difference between first and second ray, between 1 and 2. First and second ray के बीच में part difference कितना है? This distance. Opposite. Sin theta equal to opposite side. Opposite side is the part difference. So I have here written part difference divided by hypotenuse. Hypotenuse कौन सा है यहाँ पे? Perpendicular angle यहाँ पर है. So this is the hypotenuse. This is this distance. What is this distance? That is the width of first slit. That is delta A1. So divided by delta A1. Delta A1. So we'll rearrange this. Part difference equal to part difference between 1 and 2 equal to ये delta A1 इस साइड में होगा. Delta A1 sin theta. Delta A1 sin theta. What is the part difference between first and second ray? That is part difference between first and second wave or second ray is equal to delta A1 sin theta. ये delta A1 इस साइड में लिया. So I got the part difference between 1 and 2. Do you understand? समझ में आया part difference? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Again we'll move to our derivation. सर हेलो, हाँ बोलो. आप जो पढ़ाते हैं सर वो हमको समझ में उतना नहीं आ रहा है सर. मैंने क्या करना चाहिए? सर एकदा रिपीट करा ना. चालेल. का से रिपीट करू? माझी समज कसं का से रिपीट? इथूनच सर साइन थीटा पासून. साइन थीटा. तो ठीक, मैं पेज यूज करता हूँ, उसके ऊपर बड़ी डायग्राम. हाँ त्याच्यावर सांग. दोन. One minute. सर अटेंडेंस देना है क्या अभी? 1 minute रे, मैं इतना पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ फिर बता.
हो गया क्या टाइम? हाँ सर. सर 5 मिनिट बाकी आहे. सर फक्त अरे 5 मिनिट बाकी. की लिंक भेज दो ना. जी तब तक अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास. तो हम क्या करते हैं, इतना वेरिएशन कंप्लीट करता हूँ, देन अगेन आई विल रिपीट इट. ओके, सो हियर सी हियर, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? सर फ्रंट कैमरा चालू है. जी फैन दिख रहा है. हाँ सर दिख रहा है. अरे स्क्रीन शेयर पे देखो ना, दिख रहा है ना. हाँ सर. दिसतोय सर, दिसतोय. यस सर दिख रहा है. तो कैमरा नहीं ऑन हो रहा उसके लिए. ओके, नो प्रॉब्लम्स, तो बाद में देखता हूँ. सो हियर द पार्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड रे इज a1 sin theta. ओके, कैसे है मैंने बताया, जस्ट फिर से एक्सप्लेन करूंगा. सिमिलरली इफ वी फाइंड आउट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड रे यानी ये वाला पार्ट डिफरेंस यदि हमने फाइंड आउट किया तो you will get, instead of delta a1 we have to write down delta a2 sin theta. Delta a2 sin theta. So the total part difference between first and last ray का part difference यदि हमने find out किया तो it will become delta a1 sin theta. That is the total of part difference between first and second ray, then part difference between second and third ray plus dash the part difference between लास्ट रे और उसके पहले का जो रे होगा उसके बीच में का पार्ट डिफरेंस इन दिस वे. सो यदि हम इसको ये जो डेल्टा ए साइन थीटा कॉमन लेते हैं, सो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको? डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 एंड सो ऑन. सो वी नो दैट डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा an इक्वल टू a. सो वी हैव गॉट द टोटल पार्ट डिफरेंस इक्वल टू a sin theta. वी हैव गॉट द टोटल पार्ट डिफरेंस इक्वल टू a sin theta. ये टोटल पार्ट डिफरेंस है ना, फर्स्ट और लास्ट रे के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू a sin theta. डू अंडरस्टैंड अप टू दिस? हाँ सर. हाँ, साइन थीटा वगैरह थीटा समझ में नहीं आ रहा तो कुछ लोगों को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू शेयर द लिंक शेयर करता हूँ मैं आपके साथ. सो अटेंडेंस अंडरस्टैंड हुआ सर. हाँ समझ में आ रहा है. हाँ, नहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा. ओके सर. ओके सर. हाँ, ओके सर. ते पीडीएफ टाकून द्या ना. Thank you, sir. टाकेल 2 मिनिटं, आज दुपारी टाकतो. हो हो सर. सर. सर लिंक पाठवा ना लेक्चर प्रेझेंट. हो सर. Just 1 minute, I'm sharing the link. You don't worry about it. So A division का लिंक मैंने शेयर किया. Now I'm going to share the link of B division. I share both the links for division A as well as for division B also. Please click on the link and fill the Google form.